Hello friends, welcome to my YouTube channel Standard 9 Subject Yoga, Health and Physical Education. Lesson number 9 Running, जिसमें आज हम रनिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं. 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर रनिंग आर इंक्लूडेड इन शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग और स्प्रिंट्स. और ये रनिंग को स्प्रिंट्स भी कहा जाता है. तो आज हम उसकी स्किल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. स्किल्स ऑफ स्प्रिंट्स. फर्स्ट स्टार्ट, सेकंड रनिंग स्टार्ट, थर्ड रिलैक्स्ड रनिंग एंड फोर्थ फिनिश. रनिंग में स्टार्ट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट लेता है. स्टार्ट मीन्स द बिगिनिंग ऑफ द रनिंग रेस. टू टाइप्स ऑफ स्टार्ट, स्टैंडिंग स्टार्ट एंड क्राउड स्टार्ट. पहले स्टैंडिंग स्टार्ट लिया जाता था हर एक रनिंग में. इन द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंट्स द स्टैंडिंग स्टार्ट was commonly used by the runners. Due to development of the scientific theories in sports, a crowd start is started. ये क्राउड स्टार्ट की पोजीशन है. क्राउड स्टार्ट के बारे में आगे हम पढ़ेंगे. द नेम क्राउड स्टार्ट हैज़ बीन यूज्ड सिंस टू हैंड्स एंड टू लेग्स रिमेन इन टच विद द ग्राउंड. यूजिंग अ क्राउड स्टार्ट अ कंपटीटर गेट्स द स्पीड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द स्टार्ट. ये क्राउड स्टार्ट में जो भी प्लेयर होता है वो स्टार्टिंग से भी उसकी रनिंग की स्पीड पकड़ सकता है. डिपेंडिंग ऑफ द फिजिकल स्टेचर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडीज एंड द लेंथ ऑफ द लेग्स ऑफ रनर, द क्राउड स्टार्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. क्राउड स्टार्ट के जो 3 पार्ट है, 3 टाइप्स है, वो है फर्स्ट बंच ऑफ बुलेट स्टार्ट, सेकेंड मीडियम स्टार्ट एंड थर्ड इलोंगेटेड स्टार्ट. जिसमें हम हमारे फर्स्ट पॉइंट बंच ऑफ बुलेट स्टार्ट के बारे में पढ़ेंगे. इन क्राउड स्टार्ट ऑन योर मार्क सेट एंड गो पोजीशन आर एज इन एबो. जो हर एक क्राउड स्टार्ट की हर एक में तीन जो टाइप्स है जिसमें ये ज़रूरी है. द रनर हैज़ टू टेक 3 पोजीशन इन ऑल द क्राउड स्टार्ट एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ स्टार्टर. The principal difference between this start is basically the horizontal distance between the front and back feet of the athlete. फर्स्ट है हमारा बंच और बुलेट स्टार्ट, जिसकी पोजीशन ऊपर दिखाए गए जो हमारे फोटोज़ है जिसमें दिखाया है वैसी है. ऑन योर मार्क्स पोजीशन. As soon as the command on your marks heard, each runner places the toes of his strong leg on the starting block at a distance of 30 to 45 centimeter behind the starting line in his own lane. Then he places the toes of his free leg in such a way that the toes touch the ground, keeping a distance of 5 to 10 centimeter between the heel and the front part of the toes of his leg. In this position, the knee of the free leg is placed on the ground near the stronger leg in such a way that it is slightly ahead of the toes of the stronger leg. The runner places the fingers of both hands 1 to 2 centimeter behind the starting line. He will place his fingers at a shoulder wide distance, forming an inverted V with his thumbs and the fingers. The neck and eyesight should be in the direction of his lane in nature looking position. Our second point in bunch of bullet start is when the starter gives the command set
The runner leans a little forward and raises her backside. She keeps both her arms straight and leans forward. The weight of the major part of his body will be on the front foot, toes, and both the hands. In short, he performed forward and upward leaning action as shown in the finger. थर्ड पॉइंट बंच ऑफ बुलेट स्टार्ट में है गो पोजीशन। ये जिसमें यूज़ होने वाले हैं इक्विपमेंट गन, पिस्तौल और क्लैपर है। फॉर दिस एक्शन instead of giving oral command, starter gives the order by using one of the mentioned equipment, gun, pistol or clapper. As soon as a runner hears the sound, he pushes his rear leg and brings it forward. Along with the forward movement of his leg, he naturally brings his opposite arm forward and the other arm backward. Both these arms are bent at the elbow and his fists loosely closed. Our second point, medium start. Some runners prefer to take the medium start in short distance running, while some of them prefer to take it in middle distance running race. Sometimes, if after the completion of the action in the set position, the sound of the clapper is delayed, the runners find it difficult to maintain the balance of their body. Competitors having a medium height and legs with medium length generally find the medium start more suitable. मीडियम स्टार्ट में है हमारा ऑन योर मार्क्स पोजिशन। इन द मीडियम स्टार्ट एज सुन एज द कमांड ऑन योर मार्क्स इज हियर, each runner places the toes of his strong leg on the starting block at a distance of 30 to 45 cm behind the starting line in his own leg. Then they arrange the free leg in such a way that the knee of the free leg is placed 10 cm away from the arch made by the toes of the stronger leg. The knee of the free leg should touch the ground. After taking this sitting position, they place both their hands behind the starting line as in the bullet start. Second point, set in medium start. As soon as the starter gives the command set, the runner performs the forward, upward and leaning action as described in the bullet start. Third point in medium start, go position. In the go action, also as in the bullet start, after hearing the sound of clapper, the runner quickly moves his rear foot forward and begins the running action. His first step is smaller compared to the steps which he takes later. Our third point is elongated start. The runner gets lesser mechanical advantage from the elongated start than the bullet start or medium start. The three positions of the elongated start have been described in next page.
On your marks position, when the starter gives the command on your marks, each runner places his stronger foot behind the starting line. Then he places his free leg in such a way that the knee of that leg is placed on the ground 10 cm away from the heel of his stronger foot. Our second point in elongated start is set. As soon as starter gives the command the set, the runner performs the forward, upward and leaning action as described in bullet and medium start. In the set position, the hips and the shoulders are placed almost at the same height. Our third point is go. Immediately after hearing the sound of the clapper, the runner will speedily bring forward his free leg and place it 45 to 60 cm away in front of the starting line. The first step is relatively smaller than the rest of the steps or the strides. आज हम स्किल्स ऑफ स्प्रिंट्स में स्टार्ट के बारे में पढ़े। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में रनिंग स्ट्राइड्स के बारे में